Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-Fattahil-Alim. From Mentor English, myself, Professor Maraza, the series of BS English and MA English lectures. And in this, we are going to discuss the literary terms. So today's literary term is alliteration. Alliteration, we are going to alliterate the words. We are going to repeat the words particularly. The repetition of consonant sounds in a verse is called alliteration. The repetition can be at the beginning of the word or inside the word. Poets often use alliteration to audibly represent the action that is taking place. For example, I saw in my dream a lovely, loyal belly carrying cute and calmly baby in her arms. So now we are going to discuss it in poets. Poets may also use alliteration to call attention to a phrase and fix it into the reader's mind. Thus, it is useful for emphasis. Therefore, not only does alliteration provide poetry or prose with a unique sound, it can place emphasis on specific phrases and represent the action that is taking place. Now we are going to discuss in it Urdu. किसी भी अल्फाज की बार बार तकरार को एलिट्रेशन कहा जाता है. अल्फाज की यह तकरार किसी भी शेर के शुरू में या दरमियान में या अख्ताम पर भी हो सकती है. मिसाल के तौर पे उर्दू में मिसाल लेते हैं. न गंवाओ नाव के नीम कश दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया. अब आप इस शेर में देखें कि पहले मिसरे में नून की तकरार है, यानी नून ना ना ना. आप देखें पहले 3 टाइम जो है वो आपको नज़र आ रही है. और दूसरे मिसरे में सीन की तकरार है, जो कि आपको सीन 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 आ रही है. शायर इसको किसी चीज़ पर ज़ोर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बात पढ़ने वालों के ज़हन में बैठ जाए और इससे शेर पढ़ने का हुस्न भी पैदा हो. तो ये था हमारा आज का लेक्चर about English literary term, short English literary term. So let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices, and must subscribe and hit the bell icon. And if you want, if your any neighbor or your any sibling or your relative is in BS Urdu, you can also subscribe Murshid Urdu, Professor Maraza, for Urdu research and Urdu lectures. Have a good day.